السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلۃ الشیخ محمد مؤذن، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی حضور۔ الحمدللہ، اللہ وحدہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے رمضان شریف کا مہینہ الحمدللہ بحسن و خوبی جا رہا ہے۔ لوگ اپنے سوالات پیش کر رہے ہیں اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ کی عطا سے، اس کے کرم سے، اس کے حبیب کے صدقے میں، اس کے نیک بندوں بندیوں کی نظر عنایت سے، ماں باپ کی دعا، اساتذہ کرام کی نگاہ کرم سے جوابات دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، سوال شروع فرمائیں، انشاءاللہ پھر جواب دیتے ہیں۔ جی ہمارے پاس سوال نہیں آیا ابھی، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ سوال نہیں آیا ہے تو آپ ہی کوئی سوال کر دیں۔ جی انشاءاللہ شاید یہ سوال آیا ہوگا پہلے سے ہی، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ شاید یہ لوگوں کے ذہن میں بھی ہو کہ اگر صلاح پڑھتے پڑھتے، یعنی کہ اگر کوئی 4 رکعت سنت ادا کر رہا ہو، مثلا عشاء کی 4 رکعت سنت ادا کر رہا ہو، اور دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ فلق پڑھ لی، تو پھر جو تیسری اور چوتھی رکعت آتی ہے ان میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ دہرانا بھی لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سورت چھوڑ کے واپس جانا بھی جائز نہیں، تو کس طریقے سے وہ نماز ادا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں سنت غیر مؤکدہ جو ہوتی ہے وہ نفل کے حکم میں ہے، اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی امجدیہ میں لکھا ہے کہ نفل میں اگر ترتیب الٹ جائے تو گناہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی لہذا اگر وہ قل اعوذ بالفلق پڑھ چکا تو پھر تبت یدا بھی پڑھ سکتا ہے، اچھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ جو حکم ہے وہ فرائض و واجبات کا ہے، نفل میں نہیں یہ واجب نہیں ہے۔ Acha, mashallah. So the question I asked was in regards to reciting Surah Falaq in a Sunnat Mu'akkida Salah in the second rakat. If someone recites Surah Falaq in a Sunnat Ghair Mu'akkida Salah in the second rakat, then which surah should he recite in the third and the fourth rakat? So the answer is that because this is Sunnat Ghair Mu'akkida, it has been written in Fatwa Amjadiyya that because it is Sunnat Ghair Mu'akkida, they come under the ruling of Nafl, and as a result of this, it is permissible to go backwards in these kind of Salah, in Nafl and Sunan Ghair Mu'akkida Salah. It is permissible to go backwards on that. In regards to if it's any other Salah, Farz and Wajib, then you must continue. تو اگر حضرت کوئی مثلا اگر کوئی وطر کی 3 رکعت پڑھ رہا ہو اور اس میں انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ لی، تو پھر اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسری اور تیسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھے ہوئے۔ جی So the question I then posed was that if someone recites Surah Falaq in the first rakat of a witr salah, or in the second rakat of a sunnat mu'akkida, then in that situation what should happen? Then in that's the case, you would recite Surah An-Nas in both the remaining rakats that are left. So in the second and third if it's a witr, and if it is sunnat mu'akkida, then it would be in the third and the fourth rakat. جی حضرت ایک سوال آیا پھر جی حضور 1 منٹ۔ صدر الشریعہ لکھتے ہیں جی کہ یہ حکم فرائض کا ہے کہ قصداً خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ ہے، اور نوافل میں خلاف ترتیب پڑھنے کی اجازت ہے۔ در مختار میں ہے وَلَا يُكْرَهُ فِي النَّفْلِ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، یعنی نفل میں خلاف ترتیب پڑھنا یا درمیان سے ایک چھوٹی صورت کا چھوڑ دینا مکروہ نہیں۔ اچھا سبحان اللہ.
Subhanallah. So Hazrat has clarified through the works of Huzur Shajju Sharia, you have said that this ruling in terms of reciting the surahs in order only applies when it comes to farz and wajib salah. When it goes to sunan and nafil, then in that situation it will not be against the sunnah to go backwards in those salah as well. So you're allowed to recite any other surah. तो फिर हुजूर कोई लोग कहते हैं ये और मसला निकलता है इससे कि कभी कभी ये वज़ाइफ भी दिए जाते हैं कि एक ही रकात में या सब रकात में सूरह इखलास की जो तिलावत की जाती है वो भी यही हुक्म में आएगा ना फिर? वो तो चूंकि नफल है ना, वज़ाइफ हाँ में जो नमाज हम पढ़ते हैं नफल पढ़ते हैं इसलिए जी, so यही हुक्म में आ जाएगा. ठीक है, माशाल्लाह, alhamdulillah. So this is narrated in Durr Mukhtar, and the reference Hazrat has given is of Durr Mukhtar, that it is permissible to go backwards. The tartil, which is the order that you recite in, is not compulsory. It is not part of salah for any sunan and nafil. It is only for farz and wajib. Jazakallah. एक और सवाल आया हुजूर के कोई अगर हमारे ब्रिटिश आर्मी में, यानी कि ये बरतानिया की फौज में किसी को लड़ने की इजाजत है या नहीं है, यानी कि उनके लिए लड़ने की इजाजत है कि नहीं है? ये सियासी सवाल है, इसका मैं जवाब नहीं देता. ठीक है, इंशाल्लाह, सही है. As obviously, of course, this is a very political question, and it is not. It is a question which Hazrat does not feel comfortable answering. For these kind of topics, refer to your local imam sahab. Hazrat यही है ना कि अपने खुद के जो इमाम साहब है मसाजिद के, वही उनसे ही राब्ता करिया जाए इसके बारे में, और इनसे they should take answers from them kind of people. ठीक हुजूर, अभी क्योंकि तरावी की नमाज अभी हाँ रमजान शरीफ तो खत्म होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई वितर की नमाज पढ़ रहा हो और वो तकबीर कुनूत किए बगैर रुकू में चला गया, तकबीर कुनूत किए बगैर रुकू में चला गया, तो फिर वो रुकू से खड़ा होकर तकबीर कुनूत करे या फिर नमाज के आखिर में सजदे सहव करके मुकम्मल करे जाए? अगर कोई आदमी भूल करके रुकू में चला गया तो आला हजरत रहमतुल्लाह लिखते हैं फतवा रज़विया में कि अब वो खड़ा नहीं होगा, समझ रहे हैं, और आखिर में सजदे सहव कर लेगा, उसकी नमाज हो जाएगी. ऐसे ही अगर इमामत कर रहा है और रुकू में चला गया तो मुक्तदी उसको लुकमा ना दे और ना वो लुकमा ले, रुकू में ही रहे और बाद में सजदे सहव कर दे, नमाज हो जाएगी. Subhanallah. So the question I posed was that if someone goes into ruku without doing takbir kunut, which is the takbir which you do before reciting dua kunut, then what should that person do? Should he stand up again, or should he go into complete the salah and do sajda sahwa at the end? The answer Hazrat has given is that because he has gone to a farz, he will not stand back up. Allah Hazrat has mentioned in Fatwa Razviya Sharif, he should not come back up to do takbir kunut, but rather he should complete his salah, and at the end simply complete the salah with sajda sahwa at the end. I would like to, of course, welcome Muhammad Sajid Noori, mashallah. Very long time since I've met him. Mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maaf karna, sorry, I was a bit late. I was struggling to get on the live stream. No. Okay. Now, the question has come that is janaza namaz permissible in the masjid? Are you allowed to pray the janaza salah in the masjid? ये जो सवाल है साजिद भाई जी, इसका जवाब मैं जो दे रहा हूँ बहुत समझ के दे रहा हूँ और पढ़ के दे रहा हूँ और हालात को देखते हुए दे रहा हूँ. इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद मुहद्दिस बरेलवी ने और हुजूर ताजुश शरिया फकीह मिल्लत ने अपने फतावा में रहमतुल्लाह अलैह जो बात लिखी है वो ये है कि अगर बॉडी मस्जिद से बाहर है और नमाजी मस्जिद के अंदर है और ऐसा ही मुमन होता है तो फिर नमाज मकरू नहीं है. समझ रहे हैं, इसमें मशाइख का इख्तिलाफ है और बाद मशाइख ने कहा कि नमाज हो जाती है. ये इतना सख्त हुक्म नहीं है कि लोगों की नमाज ही कह दी जाए कि नहीं होगी. हाँ, अगर मस्जिद में ही बॉडी रखी हुई है
سمجھ رہے ہیں, اور مسجد میں مقتدی اور امام کھڑے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ نماز مکروہ ہوگی اور نماز باہر جا کے دوبارہ ادا کرنی ہوگی. لیکن اب اس پر لیکن سنیں, لیکن مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات نے یہ اجازت دی ہے کہ مسجد میں جنازہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. لہٰذا جب علماء اہل سنت کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو پھر لوگوں کو, وہ بھی برطانیہ میں کہ باہر بارش ہوتی ہے کہ نہیں, پریشانی ہوتی ہے, جی پارکوں میں جائیں تو نان مسلم کبھی مائن بھی کر سکتے ہیں, تو حالات دیکھتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس قبرستان میں انتظام وہاں نماز ہو جائے یا مسجد کے کار پارک میں ہو جائے. لیکن مجبوری کی صورت میں اگر مسجد میں ادا کر لیتے ہیں اور باڈی باہر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. Subhanallah, very good question presented, mashallah. That are we allowed to recite Janaza Salah in the masjid? The answer, Hazrat first explained that he's giving this answer very carefully, as there are in ikhtilaf, there is a dispute between the ulama kiram, and mashallah, there's in ikhtilaf there's beauty as well and blessings. And it's been said that Allah Hazrat as well as Huzur Taj Sharia alayhi rahmatur ridwan, Huzur Taj Sharia has given a fatwa, and in that he has said that if the body is outside the masjid, then it would be permissible for the muqtadis and the imam to be inside the masjid in order to recite the janazah salah. But if the body is kept inside the masjid, then this would be considered makruh. Along that, Hazrat also mentioned that some other ulama, they have given the fatwa openly and said you are allowed to recite the janazah salah inside the masajid. Obviously, again, with the condition that you keep the body outside the masjid, especially in the country that we live in, due to the weather forecast and due to the situation and the circumstances we are in. Sometimes we are not allowed to give the azan, etc., or give the takbir out loud due to noise pollution, etc. In those kind of situations, you would be permissible to recite it in the masjid. But if it's possible, then it is best to recite it in the qabristan, in the graveyards. Alhamdulillah, in Preston we have a set place, and I'm not aware of other places, but I'm aware that in certain cities they have a set area in every qabristan where they recite the janazah salah. If that is available, then alhamdulillah. If it isn't, then you can recite it in a masjid car park. We are very fortunate, alhamdulillah, we have areas outside the masajid where we are able to recite the janazah salah, so we should do it in those places rather than inside the masajid if we are able to. If we are not, then there are other fatwas which we can follow. So alhamdulillah, there is blessing in that ikhtilaf as well. ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر نئی مسجد بنا رہے ہیں تو مسجد بنانے سے پہلے دوسرے فلور پر یہ نیت کر لینی چاہیے کہ یہ فنائے مسجد ہے, مسجد نہیں ہے, تو پھر دوسرے فلور پر اگر جنازہ پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں. Acha, subhanallah. So as that included extra in there that when a new masjid is being built, then they should make this intention that a second floor, if there's a second floor, then that floor would be fanai masjid, which means that it is excluded from the original masajid. So it is not the masjid, it is an outside part of the masjid, which is just part of the building, rather than the actual Jamaat khana. And if you do that, then you are allowed to recite the janazah salah in that area. پھر حضرت اس جگہ میں اگر کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے آپ کو مصباح الاعتکاف پڑھنی پڑے گی. سبحان اللہ. اوکے دیٹس فائن. مصباح الاعتکاف میں میں نے لکھا ہے مفتیان کرام کے حوالے سے کہ اعتکاف مسجد میں ہو سکتا ہے, فنائے مسجد میں جا سکتا ہے وہ, لیکن وہاں بیٹھے نہیں, زیادہ حصہ مسجد میں گزارے گا. So the question obviously I posed extra on that was that if we have made that intention that this is excluded from the original Jamaat Khana or the original masjid, then would that person be able to do i'tikaf? And Hazrat referred to Misbah al-i'tikaf, and he has referred to many other ulama in that book, in which he has said that if an mu'takif is allowed to go to those areas, however, he cannot remain in that area as a place of worship. He would have to remain in the actual masjid for where he would sleep and he would worship in general. اعتکاف کی جب بات آئی ہے تو ایک مسئلہ اور سن لیجئے. مبلغین کے لیے اس مسئلے میں کافی مدنی پھول ہے. وہ یہ ہے
कि वो लोग करते क्या है कि लोगों से कहते हैं कि जो तकरीर करने खड़ा होता है नवई तो सुनना, एक ट्रेडिशन बना ली है। हालांकि शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फतावा अमजदिया के हाशिये में कि जब आदमी ये चाहे कि मस्जिद में उसे वो चीजें जो मस्जिद में नाजायज है करना उसके लिए परमिसिबल हो जाए, तो वो क्या करे, मस्जिद में एहतिकाफ की नीयत से दाखिल हो, कुछ जिक्र करे, अब उसके लिए खाना पीना वगैरह जायज हो जाएगा। ये नहीं कि अब न्याज खाने की बारी आई तो उस वक्त बोलो नवै तो सुन्नत रहते काम। ये मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों को जरा इस्लाह कर लेनी चाहिए। Subhanallah. Hazrat included a very beautiful and very important masala here, that if it's become a norm nowadays where we have niyaz, or maybe in Ramadan, of course this year we don't do this but because of the lockdown, but when we are not in this situation, then it is generally a tradition that we do our iftar in the masjid. And what happens in those times is that certain people, certain muballighin, they make the people recite the dua of i'tikaf once that person is inside, in order for that person to be able to eat the khajur or to have the niyaz. This is not correct. The correct method is that the niyat should be done from outside the masjid. Before entering the masjid, the niyat should be made, and thereafter he should do some kind of zikr, recite nawafil, etc., so some type of worship, and thereafter the rules of an mu'atikafin would apply to that person. If he does the niyat inside the masjid, then he would not be considered a mu'atakif, and he would be sinful for eating inside the masjid. खाली खाने के लिए एहतिकाफ की नियत करेगा तो हाँ, पहले एहतिकाफ की नियत करवा दें, तो जिक्र वगैरह करें, तो मस्जिद में भी नियत हो सकती है, लेकिन जिक्र वगैरह के बाद ही खाने की इजाजत दी जा सकती है। So you can do the intention once you are in the masjid, but you must do the niyat. The intention should be in order to worship or in order to get reward, not just for eating. But when you enter the masjid, say for example, if you have entered for Asr Salah, then the imams, etc., should ask the people that have entered the masjid to recite the dua of i'tikaf at that point before they recite the salah, so then it would be permissible for that person to eat after that. But if they are doing the niyat, the intention only and purely for the purpose of eating, then this would be sinful and it would not be permissible. Hazrat, the question has come that if someone is in Halate Roza and they felt whilst they were rinsing their mouth that some water has gone down their throat, then what is the ruling on this? यानी वो कुल्ली कर रहा था जी, और कुछ पानी अंदर चला गया, पानी गिर गया, जी, बाय पर्पस या विदाउट एक्सीडेंट, भूल से, उसका रोजा टूट जाएगा, उसको एक रोजे की कज़ा रखनी होगी, उस पर कफारा नहीं है लेकिन रोजा टूट जाएगा उसका। Yes, so the answer to that is that it would be, you would have to repeat and you would have to make up for that fast, which would be qaza, but there would not be a kafara. It would not be a kafara as a result of the fact that he has not done it on purpose. Had he done it on purpose, then it would be kafara, but because he's not done it on purpose, it's done by accident. But because he was aware that he was fasting, it would be qaza. Okay. Hazrat, what is the ruling on Bitcoin and cryptocurrency? असल में बिटकॉइन तो जो है अलाउड नहीं है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग समझते हो? फॉरेक्स ट्रेडिंग, हाँ, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो उन लोगों के लिए अलाउड है जो इसमें बहुत क्लेवर है, माहिर है, नुकसान ना उठाते हो, उनके लिए अलाउड है, लेकिन बिटकॉइन की इजाजत अभी उलमा ने दी नहीं। So the permissibility of Bitcoin, etc., Hazrat said that there is no permissibility given for Bitcoins as of yet. But in terms of Forex trading, it is permissible for those people who are clever in that field and they are aware of and they are professionals. They have studied that field by doing courses which are available, etc. And then they do it in order so that they do not get a loss. If they make sure that they do not get a loss and they make sure that they have studied it well enough in order to understand what Forex trading is and when it plummets and when it goes down, when the prices go up, etc., then for that person it would be permissible. If that person is a novice in that field and he just tries it for the fun, then this would not be permissible because he would be going in loss. ठीक है.
Hazrat, the question has come that on Eid day, it is stated because this year we can't pray Eid namaz in the mosque, so that we should pray Chash namaz at home instead. So, kya, do you pray the Chash namaz with Jamaat? And if you could pray with Jamaat, then are you supposed to pray out loud? देखिए ऐसा है कि ये लोग काफी लोग सवाल कर रहे हैं, कुछ लोगों को शौक लगा हुआ है कि फैक्ट्री में ईद की नमाज पढ़ें, कुछ लोगों का बड़ा हाउस है तो उन्हें ये है कि हमारे घर में मौलवी साहब को बुला के पढ़ लें। फैक्ट्री में घर में ईद की नमाज नहीं हो सकती क्योंकि इज़्ने आम के मुनाफी है। अब उसकी जगह पर क्या है, ऑल्टरनेटिव ये है कि चाश्त पढ़ें और जमात के साथ हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने और हमारे उलमा ने ये लिखा है कि 3 आदमी से ज्यादा हो तो ये तदाई है और मकरूह है। लेकिन इस जमाने में क्योंकि लोगों में जहालत आम है, इसलिए अगर नफल की जमात कर ली जाए तो मना नहीं है, आप चंद लोग घर में उसकी जमात कर लें और क़िराअत लाउडली नहीं करेंगे इसलिए कि ये दीन के नवाफिल है और दीन के नवाफिल में क़िराअत लाउडली नहीं होती। So, subhanallah, so obviously we are ordered, people are ordered, as the ulama have said, that instead of reciting Eid Salah in the homes or in the factories, etc., it is not permissible because there is a ruling and a condition of open invitation, Izni'am, which is the open invitation, meaning anyone that wishes to come into your homes or come into the workplace would be allowed to come and recite with you, and this is not the case. Whether that be at schools, and this is the same ruling as we would go at Jum'ah Salah as well, that certain people also recite Jum'ah Salah at work and at schools. Hazrat, ये भी एक मसला आ गया है कि जुमा सलाह भी लोग काम पे और स्कूल्स में वगैरह पढ़ने की यानी इजाजत सोचते हैं कि ये है और वो वहां पे भी पढ़ाते हैं, तो इसका भी यही हुक्म होगा ना? सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक पूछा गया था कि एक फैक्ट्री है और खाली फैक्ट्री वालों को जुमा पढ़ने देते, दूसरों को नहीं पढ़ने देते, तो आपने मना लिखा कि इज़्ने आम के मुनाफी इसलिए जुमा नहीं होगा। So this would come under the same ruling as well as Jummah Salah. So you're not allowed to recite Jummah Salah or Eid Salah in a place where it is not open invitation, meaning not everyone is allowed to just walk in and recite with you. Hence why when we are at home, especially this year, when we are not able to go to the masajid to read our Eid Salah, we must recite Shah Salah, which is also known as Salatul Duha. We should recite that at home, and instead of reciting Eid Salah, we should recite the 4 rakats of Shah Salah. Along with that, question is, should you recite with Jama'at? And if you are reciting with Jama'at, should it be Jahar, meaning should it be recited loudly? The answer to that the Hazrat has given is that, first of all, it is disliked to recite with Jama'at. However, in this day and age, some ulama have given the ruling of it being permissible as a result of illiteracy spreading out wide and people not being able to recite the Quran correctly. As a result of that, if a household has someone in the family who is able to recite the Qiraat properly and can lead the Jama'at, then they should do it in that way in order so that everyone gets a reward of that Salah. In terms of reciting it loud, then it is because it is in the day, it is just before Zawal time, and after sunrise, you will recite it silently. You will not recite it loudly in terms of the Qiraat. You will recite it silently and not loudly. Hazrat, if someone died and there was no debt that he had, but then someone came up to the family and said to them that your family member owes us such amount of money, then what does the family do in that situation? कोई आदमी मर जाए और दूसरा आदमी क्लेम करे कि मैंने उससे यानी उसने मुझसे कर्ज लिया था, तो जो आदमी क्लेम करता है वो 2 गवाह पेश करे, समझ रहे हैं, कि वो 2 गवाह लाए कि 2 गवाह की मौजूदगी में मतलब मैंने कर्ज दिया था। अगर वो 2 गवाह नहीं लाता है और फैमिली वाले कसम खा लेते हैं तो फिर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदमी को चाहिए कि वो कोई नोट लिख दे या घर वालों को बता दे कि मैंने फला से कर्ज लिया है। इस जमाने में बता देना जरूरी। मौत का कोई हमारे टाइम तो पता नहीं है, टाइम फिक्स है लेकिन पता नहीं, समझ रहे हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें राइटिंग में होनी चाहिए
کہ میں نے فلاں سے قرض لیا ہے کہ نہیں لیا ہے, سمجھ رہے ہیں, تاکہ کوئی آدمی جھوٹی کلیم نہ, اس زمانے میں جھوٹی کلیم والے بہت آتے ہیں. تو بیسٹ یہی ہے کہ رائٹنگ میں لکھ دیا جائے, اور اگر نہیں لکھا ہے اور کلیم کرتا ہے تو 2 گواہ پیش کرے, وہ نہیں پیش کرتا ہے تو فیملی قسم کھا لے, تو شریعت میں وہ بری ہو جائیں گے, اور جھوٹی قسم کھائیں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. Subhanallah. So if a person passed away and a person comes to claim and say that this person had taken a debt from me, so he owes me and he's passed away now, so the family members have to pay, then in that situation, the one who's claiming that there's a debt that he had given to that deceased, then that person would have to present 2 witnesses. If he's unable to present 2 witnesses, then the family members of the deceased will then take qasam, will take oath in Allah subhanahu wa ta'ala and say that this person did not take a debt from you, and then the conversation and the matter would be finished there. Of course, in this day and age, we should try, and if someone does take a debt from anyone, then you should write down who has taken debt from and present it to the family members, so that at least one person in the family is aware of what debts has been taken on that person's name, so that when he passes away, then those debts can be cleared off his name. Because of course, he is the one who will be questioned. He is the one that will be questioned in the hereafter. The family members won't be questioned if they are unaware. And we do not know when we are going to die. The time is fixed, but we do not know of this. So as a result, we should try and make sure we have it in written. If someone has a debt on anyone, then this should be written down in order. So if you do pass away, then the family members are aware of the debt that you owe on someone else. Okay. The question has come that are we allowed to work in supermarkets or shops where alcohol is being sold? Because sometimes you have to serve the customer alcohol, or sometimes you have to stock the shelves with alcohol. So are you allowed to work in such a place? اصل میں ایک جزیہ میں نے پڑھا ہے, اور اس میں پرمیسیبلٹی مل سکتی ہے, لیکن جو پیک کا گوشت بیچتے ہیں اس کے بارے میں کوئی پرمیسیبلٹی ملتی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, یعنی جو اسکین کرتے ہیں نا, اسکین, جی, جو آدمی سپر مارکیٹ میں کام کرے گا وہ اسکین کرے گا, تو اسکین کرنے میں اس کو سب کچھ اسکین کرنا پڑتا ہے, پیک کا گوشت بھی کرنا پڑتا ہے, الکوہل بھی کرنا پڑتا ہے. تو الکوہل میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہدایہ میں لکھا ہے, کتاب الحظر والاباحہ یا کتاب الکراہیہ میں, کہ سپر مارکیٹ والا اسکین کرے تو اس وقت یہ نیت نہ کرے کہ میں اس کو پلانے کے لیے جا رہا ہوں, بس وہ آیا خریدنے کے لیے وہ لے جا رہا ہے. تو اس میں تو کوئی گنجائش نکل سکتی. ہاں, مسلمان اس کو خرید کر کے بیچ نہیں سکتا ہے, صرف میں اسکین کرنے کی بات کر رہا ہوں, یا اٹھا کر کے دوسری جگہ رکھ دیتا ہے, اس میں وہ یہ نیت نہ کرے کہ میں اس کو پلاؤں گا, تو اس میں گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن پیک کا گوشت جو اسکین کرتے ہیں, آج تک میری نظر میں کوئی جزیہ ایسا نہیں آیا ہے کہ اس کی اجازت دی جا سکے. اچھا, لیکن حضرت اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ تو اس کا خود کا مال نہیں ہے, کہ یہ جو گوشت وہ کھلا رہا ہے یا پھر وہ خرید رہا ہے, وہ خود کا مال نہیں ہے, وہ تو صرف کام کر رہا ہے وہاں پہ. تو یہ وہ خود نہیں دے رہا ہے, وہ تو مجبوراً اس کے, یعنی کہ اس کے باس کے کہنے پر اس کو دے رہا ہے. اس کو اس سے کچھ نہیں نکل سکتا ہے یا کچھ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کو اس کو اٹھانا بھی منع ہے. اچھا, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, جی, اس کو اٹھانا اور اس کے لیے مددگار ثابت ہونا یہ بھی منع ہے. اس لیے So the answer Hazrat has given here is that because he's in terms of alcohol, there has been a leeway that has been made by Ala Hazrat in Hidayah. He has mentioned that if he is Imam Marghinani, Imam Marghinani, he has mentioned that if a person is giving alcohol in a supermarket or scanning the alcohol because someone is purchasing it, then he should have the intention that he's not giving it so that he drinks it, but rather he just bought it, so he's just giving it to that person. But there's no such
loopholes that have been found in regards to ham or pig meat in any way. And so as a result of that, Hazrat has said that it will not be permissible to give that meat to a person who is purchasing it. And so you have to be careful when you're working in a supermarket in that sense. लेकिन हजरत अगर कोई सुपरमार्केट में काशेपना हो, यानी कि जो स्कैनिंग में है उस पर नहीं, लेकिन सिर्फ ये जो आम वो स्टैकिंग करते हैं, स्टॉक टेकिंग करते हैं, और वो ये शर्त लगा कर करे वहां पे कि मैं जो खंजीर का गोश्त है उसको नहीं छूऊंगा और कोई भी काम कर लूंगा, तो उसके लिए जायज फिर गए? हाँ, उसके लिए इजाजत है. So if someone does work in a supermarket and he says he's not going to work on the cashier, but rather he will do stock taking or stock filling, and he makes a condition with the employer that he will not touch pork or any pig products, then for that person it would be permissible because he is not selling it as such and not giving it to anyone in their hands, but rather he's just working and he's doing all the other means. लेकिन हज़रत उसमें ये भी आता है कि अगर उसकी तनख्वाह जो आएगी तो सुपरमार्केट्स की तनख्वाह वो शराब से निकलती है, ये खंजीर के गोश्त से भी निकलती है, तो फिर वो तनख्वाह उनके हाथ में आएगी तो वो तनख्वाह उससे निकली होगी, तो फिर असल में वो जो तनख्वाह उसको देते हैं वो बता के तो देते नहीं है कि ये खंजीर बेचा है, उसका पैसा है. हाँ, इसलिए वो ये समझे कि मेरे हिस्से में वही आई है जो परमिसिबल वाली चीजें हैं, तो उसमें गुंजाइश है. फिर भी अभी मैंने ये सवालात भेजे हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान को, और उन्होंने वादा किया है कि लॉकडाउन खत्म होने पर मैं तफसीलन जवाब दूंगा. तो इंशाल्लाह फिर एक प्रोग्राम रमजान के बाद रखेंगे इंशाल्लाह, तो फिर बता देंगे लोगों को कि मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया है. Inshallah. So the question I posed was that what if someone, of course, working in a supermarket, he's still going to be getting paid by the supermarket and their earning would come from certain products which are haram. So Hazrat has mentioned that, of course, we do not get told that this is money is from selling of that pork or is from selling of the alcohol. So in that case, it would be permissible for that person to take that earning and take that wage. However, Hazrat has also said that he has sent these questions over to Mufti Mujibur Rahman Sahab, and inshallah he shall give an answer, and after Ramadan Mubarak he shall present an answer, and hopefully we'll be able to keep another program with the brothers at Elm City with Hazrat, and we should be able to clarify this in much more detail inshallah. जी मौलाना साजिद. Bismillah. Azad, the question has come that if someone has a business, lekin he scams other people, he does wrongdoings in the business, are we allowed to tell other people about the other person's business, or is this counted as ghibat? असल में मसलन मैं रॉन्ग बिजनेस करता हूं और मौलाना मुअज्जिन मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं और आपसे एडवाइस ले रहे हैं कि मौलाना निजामुद्दीन के साथ मैं बिजनेस करूं कि नहीं, तो आप उस वक्त कह सकते हैं कि नहीं मत करो इसलिए कि वो गलत काम करते हैं. ये गीबत नहीं है, समझ रहे हैं. लेकिन विदाउट शरी रीजन के किसी मुसलमान को एक्सपोज करना ये ठीक नहीं है. So Hazrat Azan said that because if a person was to do wrong businesses, and I say, for example, I want to do business with that person, and so I go to Muhammad Sajid and I ask him that, should I do business with this person? I want to do business with him, and he is aware of the wrongdoings, then he can advise me, and this would not be considered backbiting. However, without a Shari reason, without a valid reason, you should not be exposing sin of another person, as this would also cause you to be sinful as well. इमाम नबवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने रियादुस सालिहीन में कई सूरतें बताई है कि पब्लिक समझती है कि ये गीबत, बाज़ मुबल्लिगीन समझते हैं कि उलमा गीबत कर रहे हैं फला की, हालांकि जाहिलों को पता नहीं है कि उलमा को मसाइल मालूम होते हैं कि भाई गीबत किसे कहते हैं और गीबत किसे नहीं कहते हैं. बात समझ में आ रही है. तो कुछ चीजें ऐसी है, मसलन किसी का लड़का गुनाह का काम कर रहा है और ये चाहता है कि उसको गुनाह से बचाए, उसके बाप को बता दे, ये गीबत नहीं है. कोई किसी पर जुल्म कर रहा है और वो बादशाह के पास या कोर्ट में उसको ले जाए, ये गीबत नहीं है. इमाम साहब नमाज सही नहीं पढ़ा रहे हैं और उसका फतवा पूछें, ये गीबत नहीं है. कमेटी जो है खयानत कर रही है और सही काम नहीं कर रही है,
उनके खिलाफ फतवा पूछना ये गीबत नहीं है। तो ऐसी चीजें होती हैं जो गीबत नहीं मानी जाती, मगर जहालत की बुनियाद पर लोग इसको गीबत का फतवा लगा देते हैं। So Hazrat has also additionally added there that in Riyaz al-Salihin, Imam Nawawi alayhi rahmatu ridwan, he has mentioned many conditions and many situations where it would not be considered backbiting. And sometimes when the ulama kiram, when they are doing certain, they're saying certain things, certain people from the public, they feel as though the ulama kiram are doing ghibat. In fact, the ulama kiram are more aware of the conditions and the rules of ghibat. So first of all, we should keep husn zan and show that we do not cause bad words against these ulama kiram, as well as this would also be considered ghibat. ये भी एक तरह की गीबत ही हो जाएगी अगर कोई ये कहे कि उलमा भी गीबत कर रहे हैं, ये भी आपकी तरफ से एक गीबत हुई क्योंकि आपको मालूम नहीं कि उलमा को पता है कि गीबत क्या होती है. So we should also be careful in this sense, such as for example if a child is doing sinful acts, then if an alim or the imam sahib finds out and he goes and tells the father, this would not be considered backbiting, because this is to rectify and to reform that child, not so that that child is sins are exposed, but rather to help that child. Or if the imam sahib has made a mistake in salah, to approach the imam sahib or to mention to the public to say that the imam sahib has made a mistake, to recite the salah again, or in any form of this kind of things. Or if the committee are making mistakes in their accounts or doing any kind of wrongdoings within the management, then to expose this would not be considered ghibat, but rather it would be in order to stop people from sins. So we must understand the difference between ghibat and the difference between advising and giving legitimate advice to those who require the advice. Subhanallah. As inshallah, the final question. Someone has asked that as we are currently following the 18-degree rule, should we recite Isha Namaz before midnight? वो कब पढ़ना चाहता है जिसने पूछा है वो? When he wants to pray, if he wants to pray after Fajr, up to him. If you pray before Tahri, you can pray. So of course, Hazrat is just I thinking that if a person wishes to recite it afterwards and before Fajr beginning time, then this is also permissible. Of course, it is down to that person as to when he wishes to recite. But of course, at the moment, the best thing I would say, Hazrat can rectify me if I'm incorrect, follow the local masajid and to go with the ulama there. But of course, Hazrat can clarify that situation further. बात नहीं है, बात ये है कि देखिए, जब हनफी मसला यानी इमाम आजम के कौल पर ईशा का टाइम नहीं आया, तो उसमें उलमा के कई अक़वाल हैं. कुछ उलमा कहते हैं कि वो कज़ा पढ़े फजर के बाद, कोई पढ़ता है तो हम उसको झगड़ा नहीं करते, ठीक है पढ़ो भाई. और मस्जिदों में अमूमन लोग 1 घंटा सूरज डूबने के बाद पढ़ लेते हैं, ठीक है पढ़ो भाई, कोई बात नहीं. इसलिए कि इसमें उलमा का इख्तिलाफ, जिस मसले में अइम्मा और उलमा का इख्तिलाफ हो जाए, समझ रहे हैं, उसमें हम पब्लिक से झगड़ते नहीं हैं और पब्लिक को ये नहीं कहते कि तुम ये करो. लेकिन सहरी में किसी का इख्तिलाफ ही नहीं है, चारों इमाम यूनाइट है कि फजर तुलू हुई. वो अब फजर कब तुली होती है तो इस पर भी उलमा ने बता दिया कि 18 डिग्री है या हाफ नाइट है. अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है. जो लोग कहते हैं कि वो अकरबुल अय्याम अकरबुल बिलाद, तो माजूरत के साथ ये अक़वाल हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंट के लिए सर्टन एरिया है, ये एरिया नहीं. समझ रहे हैं? तो रूलिंग के लिए कोई एरिया, उसकी इम्प्लीमेंट के लिए कोई जगह चाहिए. देयर इज रूल बट नॉट फॉर दिस कंट्री, फॉर द अनदर कंट्री. मसलन जिस कंट्री में 6 महीने का दिन 6 महीने की रात हो, उसके लिए उलमा ने कोई गुंजाइश निकाली है कि वो नियरेस्ट कंट्री से टाइम ले लें. इस कंट्री के लिए थोड़ी निकाली है. समझ रहे हैं जी? हाँ. So Hazrat additionally added there that of course, like the first ruling, one of the first rulings we mentioned in regards to Janaza Salah, there's ikhtilaf
And again, in this situation, there's also ikhtilaf in regards to when you should recite your Isha Salah when there is no time for Isha Salah. So whichever time you decide to pray, if someone decides to pray Qadha after Fajr, then this would also be permissible, because according to some ulama, this is allowed. If someone decides to pray in the middle of the night, at midnight, then that is also permissible. If someone decides to pray 1 hour after sunset, this would also be allowed, as they are ikhtilaf, and we will not be arguing in regards to this. However, we have to say that in terms of Sahri times, there is no ikhtilaf in regards to between the imams, and so we would stick to the 18-degree rule. And there are leeways that have been given in certain rulings, but this does not apply in this situation, in this country, because we do have time, and these rulings only apply in countries where there are no times, such as countries where there are 16 months day and 6 months night. And so they would take time from the local, the closest country or closest Islamic country. But for our country, we can apply the 18-degree rule for suhoor. So we must stick to that. When it comes to Isha, because there is no time for Isha, then we would not be confusing the public in regards to this. Whichever time they feel best suits them, and whatever time they feel more comfortable with, and their heart is at ease, they should recite it in those times. साजिद भाई सुन रहे हैं मुझे? जी ये बात लोगों को बताओ कि एक है तकरीर करना, एक है किताब लिखना, एक है किताबें पढ़ाना, और एक है फतवा देना। समझ रहे हैं? जिस तरीके से सॉलिसिटर हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं, मेडिकल साइंस में डॉक्टर अलग होते हैं, कान का अलग है, नाक का अलग है, आंख का अलग है, हार्ट का अलग है। समझ रहे हैं? आंख वाला कान का ऑपरेशन करेगा तो खतरा हो जाएगा, तो लोग पहले स्पेशलिस्ट देखते हैं अपने जिस्म को बचाने के लिए कि वो स्पेशलिस्ट है कि नहीं, लेकिन रूह को बचाने के लिए स्पेशलिस्ट नहीं देखते हैं तकरीर अच्छी कर लेता है, उसके मुरीद ज्यादा है, तो समझते हैं कि यही सबसे बड़ा मुफ्ती है। तकरीर कोई भी कर सकता है, समझ रहे हैं? तकरीर कोई कमाल नहीं है। दारुल में पढ़ाना, बहुत मुदरिस पढ़ाते हैं, एक से एक मुदरिस किताबें पढ़ाते हैं, कोई मंतिक पढ़ाता है, कोई फलसफा पढ़ाता है। मंतिक फलसफा पढ़ा लेने से या बुखारी शरीफ पढ़ा लेने से कोई फतवा नहीं दे सकता है। फतवा कौन दे सकता है? जिसने इल्मुल फतावा मुफ्तियों की बारगाह में सीखा हो, या वो मुफ्तियों के पास हमेशा कांटेक्ट में रहकर मसाइल बताता हो, और वो फैक्ट्रियों में काम करे और मसाइल बताए तो काम नहीं चलता है। उसके लिए आदमी को दुनिया से किनारा कश होकर किताबें ढूंढनी पड़ती है, मुताला करना पड़ता है, शामी देखनी पड़ती है, बहरुल राइक देखनी पड़ती है, फतुल कदीर देखनी पड़ती है, सारी किताबों को जहन में रखना पड़ता है, फतावा रज़विया को देखना पड़ता है, मुफ्ता भी कौल क्या है, जाहिर रिवाया क्या है, नादुर रिवाया क्या है। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें बस इंग्लैंड में तो एयरपोर्ट से इधर आ गए, मुफ्ती बन गए, समझ गए? तो ऐसे काम नहीं चलता है। तो ऐसे लोगों से आप फतवा ना पूछें। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिन लोगों से पूछते हैं उनका नाम आपको बता रहे हैं। हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, पाकिस्तान में हजरत अल्लामा मुफ्ती इब्राहिम साहब जिन्हें फतावा रज़विया का माहिर कहा जाता है, हजरत मुफ्ती वसीम साहब जामिया नईमिया कराची, ऐसे लोगों से हमने फतवा पूछा है, और इन लोगों ने पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के उलमा ने हमारी बातों की तस्दीक की है। ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन रज़वी, मुफ्ती कादी शहीद आलम, ऐसे लोगों ने तस्दीक की है, तब हमने इन मसले को आगे बढ़ाया है। कोई अपनी तरफ से इस मसले को आगे नहीं बढ़ाया है। तो जो लोग इसके अगेंस्ट कर रहे हैं, जरा कोई मोतबर मुफ्ती का नाम लेकर बताएं। मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब जोधपुर, उन्होंने हमारी तायद की है। मुफ्ती आलमगीर साहब जोधपुर, उन्होंने हमारी तायद की है। जरा वो नाम बताएं कि किस मुफ्ती ने इनकी तायद की है। समझ रहे हैं? तफसील लिखने से कोई मुफ्ती नहीं हो जाता है, या नाम लगा देने से कोई मुफ्ती नहीं हो जाता है। जरा इसको बताओ जी। Ji, subhanallah. Hazrat obviously wanted to clarify in regards to these rulings in regards to suhoor, and obviously there are people out there who are claiming the timings to be later, etc., and different timings. The Hazrat made a very valid point, mashallah, in regards to the fact that when we have ulama kiram, we are not rejecting that they are ulama, but even in that field, there are different fields.
Some people are able to speak, some people are able to write, some people are able to write fatwas, some people are able to teach books, some people are able to only read books. So when we are getting fatwas of people, we need to understand what field they are in and what they specialize in. Hazrat was mentioning the beautiful names of great scholars, subhanallah, great mufti kiram of the Ahl Sunnat wal Jamaat of Hindu Pak. And mashallah, the names that he mentioned, Huzur Taj Shaykh, Huzur Muhaddis Kabir, Huzur Mufti Nizamuddin Misbahi Sahab, Huzur Muzaffar Shah Hussain Sahab, all these names that he mentioned them because to ensure and to show that the rulings which Hazrat is mentioning and bringing forth to us are all from valid points and from valid Mufti Kiram who have learned and studied under great scholars, and the knowledge which they have are incomparable. And so we need to understand that the ruling which Hazrat has presented to us, especially in regards to our suhoor, it is regarding our fard. So we must take it seriously, and we must not take it lightly and just accept whatever is given to us. And as Hazrat has mentioned, do not take it from anyone, take it from those who are able to give you the rulings and who are able to give the correct rulings. And he has obviously, again, he has challenged that if you present at least one Mufti Kiram who accepts the ruling of those who have done a different suhoor time, then he will accept their names and he will be able to speak to them. But it is not possible, as the names he has mentioned, I would say, are the greatest Mufti Kiram of the Ahl Sunnat wal Jamaat of this time. And there is no question about this. So those Mufti Kiram have endorsed the fatwas and they have accepted the rulings which have been presented by Hazrat today, especially in regards to suhoor time. So we must follow that, as it has been endorsed by great Mufti Kiram. The fatwas have been issued, and so we must follow those fatwas and not of those who are just reciters or who are just speakers. These are those who have actually studied the books. And as he also mentioned, the great Mufti Ibrahim Sahab from Pakistan, who is known as the most experienced and the professor of Fatwa Razviya Sharif. And he himself has endorsed this ruling as well. So we must make sure that we protect our rozas, we protect our fasts, and we follow the correct timings and follow the correct Mufti Kiram and Ulama Kiram as well. और आखिरी बात, जी सर, हम तमाम उलमा किराम की बारगाह में अदब से ये कहते हैं कि चलो अभी भी टाइम गया नहीं है, उलमा का एक पैनल बनाओ, यूके के जो अच्छे काबिल उलमा है, जो फिक़ह की कुछ समझ रखते हैं, वो पैनल और जिन मुफ्तियों का हमने नाम लिया है जो जिंदा है, वो बैठ जाए, डिस्कस कर ले, समझ रहे हैं, जिसके दलाइल मजबूत हो जाए, चलो उसकी बात मान लेंगे। अगर वो ये कहते हैं कि हम गलत हैं, अगर हम गलत साबित हो गए बिलफर्ज, तो चलो हम वो कर लेंगे, हालांकि इंशाल्लाह नहीं साबित होंगे, लेकिन बिलफर्ज मान लेते हैं, समझ रहे? तो कहने का मतलब ये है कि खाली मस्जिद में तकरीर करने से काम नहीं चलता है, मेहनत करनी पड़ती है। और अभी सेमिनार हुआ था पिछले साल मुबारकपुर में, 2 सेमिनार हुआ, हिंदुस्तान में 3 सेमिनार हो चुके, इस पर ये लास्ट सेमिनार हुआ है, बड़ा जबरदस्त। उन्होंने सब राब्ता किया इंग्लैंड के उलमा से, हॉलैंड के उलमा से, और सेमिनार में पैसे खर्च होते हैं, 5-5 लाख रुपया खर्च होते हैं एक मसले को हल करने के। तो उन्होंने यही बताया 18 डिग्री और हाफ नाइट, समझ रहे? हमने उनको कोई पैसे नहीं दिए थे, कोई नजराना नहीं दिया था कि हमारे नजराने पर फतवा बदल दे, नहीं, ना हमने सेमिनार का पैसा दिया ना नजराने का दिया, खुद उन्होंने ये सेमिनार रखा, सरबराह आला साहब ने रखवाया, हॉलैंड में आए थे, तो उन्होंने यही मेरे पास मौजूद है, जिसको चाहिए मैं दे सकता हूँ। इसलिए यहाँ एक सेमिनार रख लो, हम लोग इतने पैसे खर्च करते हैं, तो चलो सारी मस्जिद वाले पैसे निकालें, एक सेमिनार यहाँ रख लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, हम तैयार हैं, we are ready inshallah every time. Inshallah. So Hazrat obviously added there as well that of course because this is a serious matter and we must understand that these kind of matters have been discussed prior to our discussions, and these fatwas are not just given, there are seminars that are held for days. And I personally have met Mufti Nizamuddin Sahab, and he mentioned himself, he says that the seminars which they keep, sometimes they go on for days in just regarding one ruling. And so for this ruling, it has been said that they kept 3 seminars in total. 2 was kept last year, and they contacted the ulama kiram of UK, of Holland, and they considered all aspects of the rulings
and thereafter they came to a conclusion of the 18 degrees. It is not just a ruling which has been just given. And Hazrat has also said that if any ulama kiram with respect, they would ask if they wish to sit and to discuss this matter, then if it is possible, then we should keep a seminar here as well. If any ulama kiram respectfully would like to come forward and take this responsibility and take this with Hazrat Sahab and inshallah sit, so that the public is guided as well, and inshallah the public's confusion is also wiped away as a result of these kind of mas'alas and these kind of rulings being clarified through in these kind of scenarios, so that the public are not confused, and whatever the rulings are, they can be cleared openly as well, inshallah. दो शेर पढ़ दो हजरत मूसा काजिम पर. साजिद. इश्क है जिनका हम पर लाजिम, सुभान अल्लाह. मूसा काजिम, मूसा काजिम, हम गए जिनके दर मुलाजिम, मूसा काजिम, मूसा काजिम, जो दो सखा है शान तुम्हारी, जो सखा है शान तुम्हारी, अफ़्व करम है काम तुम्हारा, हम भी रहेंगे साइल दाइम, मूसा काजिम, मूसा काजिम, हम भी रहेंगे साइल दाइम, मूसा काजिम, मूसा काजिम, 14 बरस तक जेल में ठहरे, 14 बरस में ठहरे, को सके कुछ ना कहते, यूं काजिम, काजिम, मूसा काजिम, यूं कहते हैं तुमको काजिम, मूसा काजिम, मूसा काजिम. Subhanallah, subhanallah. मौलाना मुअज्जिन हजरत मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका मज़ार बगदाद शरीफ में है जी, और जिनके बारे में इमाम शाफई फरमाते हैं वाह वाह, कि इनके मज़ार पर दुआ कबूल होती है. सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह साजिद भाई और हमारी पूरी टीम के साथ जाना हमें नसीब हुआ, और उनके बगल में ही हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार. जी, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत दुनिया आखिरत में बाकी रखे. आमीन, और आमीन. दुआ कर देते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम, या अल्लाह हम सब तौबा करते हमारे गुनाहों को माफ फरमा. हजरत मूसा कासिम रहमतुल्लाह अलैह जो तेरे सालेह बंदे हैं, उनके वसीले से अर्ज करते हैं या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, जितने बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा. या अल्लाह शर्र नफ्स शर्र शैतान से बचा, बुरी मौत से बचा. मौलाना मुअज्जिन को भी शिफा अता फरमा, साजिद पर भी करम फरमा, हमारी पूरी टीम पर करम फरमा. जितने भी देखने वाले हैं, मर्द हो खवातीन हो, तेरे बंदे बंदियां, या अल्लाह सबको दीनी दुनियावी भलाइयां अता फरमा. या अल्लाह हम सबको इज्जत इनकिसारी अता फरमा. परवरदिगार आलम तेरी रजा के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा. जो लोग इदारों का ताउन कर रहे हैं, जो लोग गरीबों का ताउन कर रहे हैं, या अल्लाह उनके रिज़्क़ हलाल वसअत अता फरमा, और सदका देने की जितनी भी फजीलतें हैं उनको अता फरमा. परवरदिगार आलम जल्ल शानहू, मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस मुल्क में हम गुजरातियों का भी एक दारुल बन जाए. या अल्लाह गैब से मदद फरमा, गैब से मदद फरमा. और मेरे मौला जल्ल शानहू, तू चाहे तो बहुत जल्द हो सकता अपना करम फरमा दे. हज़रत मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से मेरे मौला इसकी हमें तौफीक अता फरमा. हम सबके ईमान, उम्र, सेहत, रिज़्क़ बरकत अता फरमा. हर आफत बला मुसीबत से महफूज फरमा. दुश्मनों से, हासिदों से, जालिमों से हमारी हिफाजत फरमा. आमीन बिजाहि नबी करीम बिरहमतिक. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.